Hi guys, welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. Myself Juhi Sharma, and here we are with yet another video for class 11th, right? So here we are specifically focusing on class 11th, CBSE class 11th syllabus. And right now, the topic for today is demand, right? Now, demand is one very important topic, you would say, right? From microeconomics perspective, it's one of the basic topics which actually carves the base for all the other topics, right? So basically we have microeconomics as the subject matter in class 11, and in that we will be studying about demand. Now demand in itself can be a very vast topic, right? Demand can be a very vast topic wherein you need to know, you need to understand that what is demand, what are the determinants of demand, right? What all things are there in demand, and apart from that we have demand law. But before jumping on to demand law, we have a lot of things that we need to discuss, right? There's demand curve, individual demand curve, market demand curve, and a lot of things, right? So in today's session, we will be covering each and everything related to demand. Demand से related जो भी है, वो सारा हम इस session में cover करेंगे. And in the next session, which will be conducting it on Wednesday at 9 p.m. Right? The next session we'll do on law of demand. Okay. So let's start that what actually is demand. Demand है क्या? So often we get confused between wants, we get confused between what we are willing to buy, right? But demand is something which is I would say something which we are willing to buy, right? And which we can afford, which we can able to buy at every possible price at every given point of time, right? So whenever you are actually writing, or whenever in the exams they ask you to write the definition of demand. So what is demand? Demand is actually that particular quantity which you are actually willing to buy, you are able to pay for in every given point of time, or in every given period of time. So all these things comprises of demand. Okay, willing to buy, able to buy, and at every given point of time, at every point, right? That is what demand is. अब हमने डिमांड की बात कर ली. Now we should know that what is actually demand schedule, right? Now you need to understand when we saw that particular definition of demand, हमने दो चीजें यहाँ पे देखी थी. वो क्या थी कि भाई what is the quantity, and second चीज हमने देखी थी कि at that particular price, or at any given price at any given point of time. So two things are very important when we study about demand. Number one is price, and number two is quantity demanded, right? ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज इसी के अराउंड आपका लॉ ऑफ डिमांड चलता है. बेसिकली इसी के अराउंड हमारा पूरा जो डिमांड है वो चलता है. ओके, नाउ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल पढ़ने से पहले, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट सेशन वी हैव कवर्ड इंडिफरेंस कर्व के मैप, right? That is basically the tabular representation, right? That is basically the schedule. Okay, likewise, what is demand schedule? Demand schedule is a table actually wherein it shows all the possible permutation and combination of the prices and quantity demanded that a consumer is willing to buy, okay, at any given price of point. Okay, so demand schedule क्या है? Demand schedule is basically a tabular representation. Basically ये वो tabular representation है जिससे हम जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है, हम इस प्राइस पर कितना क्वांटिटी लेंगे, इस क्वांटिटी पर कितना प्राइस लेंगे, we can determine that. So that is actually what demand schedule is. और इसी demand schedule से we define or we make the demand curve, right? इसी demand schedule से we make the demand curve. And what is demand curve? Demand curve जो है वो it's a negative sloping downwards towards the right, and we'll study about that in the next class, in the next session. Okay, now when we're studying about demand, so
Is there a demand of only one consumer in an economy? The answer is no. एक आपका एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड हो सकता है, एंड another concept of demand is the market demand, the demand which actually gives the idea of any particular product in the entire market. So we have two types of demands. We have individual demand and we have market demand. Individual demand क्या होता है? Individual demand होता है, as the name suggests, of an individual, of you and me as an individual. So जो हमारी demand होगी, right, किसी भी goods की at every given price or whatever quantity we are demanding at any given point of time, वो होगा individual demand. But when we accumulate, right, when we compile the demand of all the consumers in a market, right, market में जितने भी consumers हैं उन सबकी demand को हमने compile कर दिया, उन सबकी demand को हमने accumulate कर दिया, उसके बाद जो हमारा डिमांड शेड्यूल बनता है, जो वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बनता है, that is actually what market demand schedule is, right? In the next class, I'll show you the graph too, what kind of a graph is of individual demand and market demand, right? Individual demand का थोड़ा सा steep होता है than market demand. Market demand is more flatter. Why? Because we have a lot of consumers which are involved in that market demand, right? So these are the two types of demand schedules we have. Now moving further about demand curve. What is demand curve? अब आपने एक schedule बनाया, आपके पास एक schedule है, ठीक है, उस schedule में क्या है आपका, उस schedule में आपका tabular representation है of x and y and so and उनके quantity demanded and so price, right? लेकिन जब आप उस tabular representation को you put on on a graph, right, तो आपको एक downward sloping towards the right करके आपको एक curve मिलता है, right? That is actually what demand curve is. Okay, what is demand curve? Demand curve is actually a graphical representation of the demand schedule, right? जिसमें आपके prices होते हैं, quantity demanded होती हैं, right, at any given point of time. वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है demand curve. Basically, hi Krishna. Basically, आप demand schedule से जो आप curve derive करते हो, जो curve आपका बनता है, that is actually what demand curve is, right? Demand schedule क्या है? It is a tabular representation and demand curve is the graphical representation. Okay. Now, अगर आपको कितना slope है of demand, right? If you have to calculate the slope of demand curve, अगर हमें demand curve का slope पता लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? It is actually delta P upon delta Q. आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको change in price upon change in quantity demanded, delta P upon delta Q से आप निकाल सकते हैं the slope of demand curve. Demand curve का क्या slope है वो आप delta P upon delta Q से निकाल सकते हैं. That is the formula. What is delta? Delta is basically the change, right? Delta is the change. Dinesh, elasticity of demand क्या है वो I will cover in the next session. In that session we'll cover law of demand and all the types of elasticities of demand. ठीक है Dinesh, there are certain type of elasticities. I'll tell you what all are the type of elasticities of demand. Okay, now moving further to the types of demand curve, as I have already explained you, demand schedule में मैंने आपको बताया था there are two types of demand schedule, individual demand schedule, market demand schedule. Likewise there are two types of demand curves. जब आप individual demand schedule से curve derive करते हो वो क्या है, that is individual demand curve. और जब आप market demand schedule से curve derive करते हो वो क्या है, that is actually the market demand curve. Okay, so these are actually the types of demand curve. ठीक है, again in the last slide I have told you what is demand curve. How does the demand curve of individual demand look like? It is more steeper as compared to the market demand curve. Market demand curve is more flatter. Okay, so this is actually the types of demand curve we have, right? Now moving on to demand function.
नाउ हमें एक चीज पता है कि डिमांड फंक्शन क्या है. अपार्ट फ्रॉम प्राइस, अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटी, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच डिटरमाइंस द डिमांड. अब इस बात से आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड अग्री टू मी कि apart from price, apart from quantity demanded, there are a lot of things that actually affects the demand or that actually determines the demand. Okay, so वो सारे factors, right, जो इस demand को affect करते हैं, keeping in mind what is the demand of that good, तो उन सब चीजों का जो functional relationship है, that is known as the demand function. I am explaining it to you again. What is demand function? Demand function is actually a functional relationship between demand of a good and the factors affecting it, or you can say the determinants of demand, right? जैसे कौन कौन से factors हो सकते हैं आपके. अब for example, अगर हम टी की बात करते हैं, right? टी का जो substitute है, okay, वो क्या है? कॉफी. okay? और फिर अगर मैं कुछ और बात करूं, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है या टी का प्राइस कम हो जाता है, सो इट विल एक्चुअली बी अफेक्टिंग व्हाट? द डिमांड, राइट? व्हाई? बिकॉज इन सारी चीजों का जो डिटर्मिनेंट्स है डिमांड का, उनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ऑन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, right? So what is demand function? It is actually the functional relationship between the factors affecting demand and the demand of a good. अब उसमें कौन कौन से determinants आते हैं, कौन कौन से वो सारे factors हैं, it's given in the right column. Now we are discussing about the determinants of demand. जैसे कि price of commodity number 1. अगर हम example लेके चलते हैं टी, okay? अगर आपका टी का price इंक्रीज हो जाता है, इट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ टी. अगर टी का प्राइस कम हो जाता है, इट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ टी, राइट? सेकेंड जो डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कमोडिटीज लाइक लेट्स से सब्स्टिट्यूट ऑफ टी इज व्हाट? कॉफी. अगर कॉफी का प्राइस कम या ज्यादा होता है, इट विल एक्चुअली अफेक्ट द डिमांड ऑफ टी, राइट? सो ये क्या है आपका? दैट इज ऑल्सो वन डिटर्मिनेंट विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ टी, राइट? उसके बाद नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स. नाउ अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तो क्या है वो, they can either switch to better version of tea, or they can either switch to coffee, or they can either switch to green tea, right? और अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो जाता है, सो वो शायद कम चाय पीने लगेंगे, या फिर उसके बाद क्या है, वो कम चाय का कंजम्पशन करने लगेंगे, तो टी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. सो बेसिकली जो मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड को अफेक्ट करता है. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. अब क्या है, मुझे बहुत टाइम से मैं टी पीती थी, लेकिन अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया, मेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई. नाउ आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, right? So taste and preferences of the consumer too affect the demand of that particular good, in this case tea, right? Changes in weather condition. अगर weather conditions change हुए, for example अगर मैं छोटा सा ही देती हूँ अभी आपको, मॉनसून्स में, राइट, विंटर्स में टी का कंजम्पशन बढ़ जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, राइट? समर्स में टी का कंजम्पशन रिलेटिवली कम हो जाता है. सो बाय चेंजिंग दीज वेदर कंडीशंस, व्हेन दीज वेदर कंडीशंस चेंज, राइट, तो भी क्या होता है, आपका डिमांड ऑफ एनी गुड जो है वो अफेक्ट होता है, राइट? Changes in population. For example, we have that population जो ज्यादा कॉफी प्रेफर करती है over tea, तो उससे भी क्या होगा, टी का कंजम्पशन, टी का डिमांड would get affected. Distribution of income, changes in structure of population, changes in the quantity of money, phases of business cycle, changes in saving habits, ये सारी चीजें जो है, all these things affect the demand of a particular good, and all these things are the determinants of डिमांड. ओके, सो अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, आपका डिमांड ऑफ एनी गुड विच आर रिलेटेड टू दीज डिटर्मिनेंट्स वुड अफेक्ट, राइट? सो जो फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन अदर फैक्टर्स एंड आपका जो डिमांड ऑफ एनी गुड इज एक्चुअली व्हाट डिमांड फंक्शन इज. मूविंग फर्दर टू द टाइप्स ऑफ डिमांड. अगर मैं आपको बात बताती हूँ टाइप्स ऑफ डिमांड की, what all are the types of demand do we have? So we have basically 3 types of demand. हमारी 3 types of demand है. We have price demand, we have income demand, and we have cross demand, right?
ये बेसिकली हमारी 3 टाइप्स ऑफ डिमांड है. आई विल टेक ईच टाइप वन बाय वन, बट लेट्स सी व्हाट प्राइस डिमांड इज. ओके, प्राइस डिमांड क्या है? प्राइस डिमांड बेसिकली आपको दिखाता है कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ आपको एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जब मैंने आपको पीछे वो डिटर्मिनेंट्स बताए थे, वो फैक्टर्स बताए थे, तो नेक्स्ट सेशन में व्हेन वी विल बी स्टडीइंग लॉ ऑफ डिमांड, वी ऑलवेज हैव टू कीप दिस इन आवर हेड. एंड अगर आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा होगा, वी ऑलवेज मेक श्योर टू राइट इट. Other things being constant, the demand for a commodity will increase or decrease as the price increase or decrease. So हम ये चीज जरूर लगाते हैं, other things being constant, right? वो other things क्या हैं? Other factors क्या हैं? वो other factors, other things, those determinants, those factors which we have studied. Okay, so what is price demand? Price demand वो है जो actually आपका relationship दिखाता है between price and quantity demanded when other things are equal or कांस्टेंट, राइट. और क्या है वो? आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स फंक्शनल रिलेशनशिप है, जिसको हम दिखाते हैं डी ऑफ एक्स. मतलब डिमांड ऑफ एक्स कितना रहेगा? जितना चेंज होगा फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स के, राइट. सो दैट इज प्राइस डिमांड. उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड है वी हैव इज इनकम डिमांड. अब ये तो हमने उससे किया जो हमारा क्या था, जो बेसिकली हमारा था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेटेड. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम डिमांड, what is income demand? Income demand is basically wherein we discuss about quantity demanded and income of a consumer, right? Again, other things being constant, ये चीज हमारा constant रहेगा in demand, right? Income demand में क्या होता है? Income demand में होता है whenever there is something between income and क्या? आपका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, राइट. अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उससे फर्क पड़ेगा ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी व्हिच ही और शी इज डूइंग, राइट. इज प्राइस एंड डिमांड ऑलवेज इनवर्स? दिनेश, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात देखें, सो यस दिस इज ट्रू, राइट. इनकम डिमांड में क्या है? दैट इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. अब जब हम इनकम डिमांड की बात करते हैं दिनेश, तो हम दो चीजों को ध्यान में रखते हैं. वी कीप इन माइंड नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. दिनेश मुझे एक बात बताइए, अगर आपका इनकम बढ़ा, राइट, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, तो क्या आप नॉर्मल गुड्स का डिमांड इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, सो विल यू राइज द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स? द आंसर इज यस. जो आपके स्टेपल्स हैं, जो आपके नॉर्मल गुड्स है, उनका डिमांड आप ऑब्वियसली इंक्रीज करोगे जब आपकी इनकम बढ़ रही है. दिनेश, अब मुझे आप दूसरी चीज बताइए, अगर आपकी डिमांड बढ़ी, राइट, तो क्या आप इंफीरियर गुड का कंजम्पशन कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? Dinesh, will you increase it or decrease it, the consumption of inferior goods, when your demand will, when your income will get increased? Of course, we will decrease the consumption of inferior goods. जो inferior goods है, उसका consumption हमारा कम हो जाएगा, right? Why? Because हमारा क्या है? हमारा इनकम जो है वो बढ़ गया, राइट. उससे क्या हुआ? हमारा जो इंफीरियर गुड्स है उनका कंजम्पशन कम हो गया. नाउ आपको क्वेश्चन में आ सकता है एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल गुड्स, एग्जांपल्स ऑफ इंफीरियर गुड्स, राइट. नॉर्मल गुड्स कैसे? अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो वी विल गो मोर टुवर्ड्स स्टेपल्स, राइट, मोर टुवर्ड्स ऑर्गेनिक गुड्स, ऑर्गेनिक फूड, राइट. लेकिन अगर मान लो इनकम है ही नहीं कुछ, तो क्या ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी? नहीं. वी विल गो मोर टुवर्ड्स कि भाई हमें बासमती राइस नहीं खाने हैं, हम नॉर्मल वाले राइस खा लेंगे. हमें 120 रुपीज केजी वाले राइस नहीं खाने हैं, वी ईट 60 और 50 रुपीज केजी वाले राइस. सो दिस इज इंफीरियर गुड, राइट. इट डिपेंड्स अपॉन इनकम. इनकम ऊपर नीचे होती है, उससे जब डिमांड अफेक्ट करती है, सो वो दो टाइप के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, राइट. एंड द थर्ड टाइप ऑफ इनकम इज क्रॉस डिमांड. अब ये क्रॉस डिमांड क्या है? क्रॉस डिमांड में एज द नेम सजेस्ट, आप अगर क्रॉस डिमांड आप सोचो तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आएगी, दैट देयर आर टू कमोडिटीज, राइट. क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दो कमोडिटीज हैं. क्रॉस डिमांड में क्या है? देयर आर टू कमोडिटीज. एज इन, अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर टी और कॉफी दो कमोडिटीज हैं, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा
ओके, सो दिनेश आप मुझे बताइए, टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? Quantity demanded of coffee will increase or decrease if tea का price will rise. If टी का प्राइस विल राइज, लोग क्या कहेंगे, लोग टी को छोड़ के कॉफी प्रेफर करने लगेंगे, राइट? ऑफ कोर्स इट विल बी मोर, व्हाई? बिकॉज ये आपके क्या है, टी और कॉफी जो है वो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मतलब क्या एक दूसरे की जगह पे वो यूज किए जा सकते हैं टू सेटिस्फाई द वांट्स, राइट? अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस डिमांड की, और अगर आपके पेट्रोल का प्राइस बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, सो क्या वो आपके ऑटोमोबाइल जो है, जो आपके फ्यूल रनिंग, जो आपके पेट्रोल रनिंग ऑटोमोबाइल है, उसकी डिमांड पर अफेक्ट करेगा? उसकी क्या डिमांड पे अफेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट ऑन दैट डिमांड टू, व्हाई? बिकॉज पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल जो है वो आपके जो फ्यूल वाले ऑटोमोबाइल है, दीज आर व्हाट, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब ये दोनों चीजें साथ के साथ चलने वाली हैं, राइट? बिकॉज एक दूसरे के बिना इनका डिमांड जो है वो कंप्लीट नहीं है। सो जहां पर भी आपके दो कमोडिटीज आते हैं और उन दो कमोडिटीज की वजह से प्राइस जो है वो अफेक्ट हो रहा है, एक का प्राइस अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसकी वजह से जो सेकंड है उसका भी प्राइस अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, सो इन दैट केस वी हैव क्रॉस डिमांड। और इस तरीके से वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुड्स, वी हैव सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। What are substitute goods? Substitute goods are those goods जिनको आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, which we can substitute, right? वो है आपके substitute goods. Complementary goods क्या है? Complementary goods are those goods जिनकी डिमांड एक दूसरे के बिना is incomplete. They complete the demand for each other, right? एंड इसी को ही बेसिकली हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, वेयर इन अगर एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, उससे दूसरी कमोडिटी के डिमांड पर असर पड़ता है। व्हाई? बिकॉज दीज एक्स एंड वाई बोथ आर इंटर रिलेटेड, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, दीज आर रिलेटेड, राइट? सो दैट इज व्हाट क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज, right? So with this, we have covered all the three types of demands. Thank you so much, guys, for staying tuned. I wasn't able to write too much because there was some technical error with my devices, right? So I'm so sorry for that. But in the next class, we will be covering law of demand, and I'm hoping to see you guys soon, right, in the next session. Thank you so much. Stay tuned. Do give this video a big thumbs up. It basically motivates us to come up every week for you all. Thank you so much. Bye, guys.